Kolkata woke up to another horrific fire this morning, this time a five-storey market complex. 20 people are dead. The victims, mostly labourers working in the market, were asleep. Once again, there appears to have been a complete disregard for fire safety rules. There was only one proper entry and exit route. Smoke billowing out from Surjo Sen market. Smoke and fire that killed at least 20 people in Kolkata this morning. Shopkeepers, labourers and a beggar woman who had sought shelter inside on a chilly night. Among those dead, Gopal Pal, whose wife fell unconscious when she heard the news. Pal, like most of the others dead, lived far from Kolkata. Like the other victims, he would simply go to sleep inside the market in the middle of shops that sold fish, vegetables, rice and inflammable materials like plastic. सुबह में से कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का आदमी नहीं था, इसलिए तो इसकी वजह से तो और भी लोग मारा गया है यहाँ पे. So really sorry picture emerging over here about what happened early in the morning. 8 minutes, sir. Early in the morning, the fire brigade apparently came late. Apparently they came without gas cutters, without gas masks, and therefore rescue was seriously hampered and delayed. But the Minister for Disaster Management points his fingers elsewhere. It is an illegal, unauthorized market. It has come up during the regime of left front last 34 years. The opposition is not amused. Well, for the Trinamool Congress, the original sin always goes back to the CPIM. We need a judicial inquiry on this issue. Mamata Banerjee surveyed the site of the disaster and sat for hours in front of the morgue to oversee the whole business of bodies being handed over to relatives. Anything to minimize the trauma of the bereaved. আমি এখানেই কাজ করব, আমি ওই দোকানের পাশেই রান্না করব, আমি দোকানের পাশেই বিছানায় থাকব, আমি দোকানের পাশেই ঘুমাবো, কিন্তু বিপদ আসলে জীবনটা তো প্রথমে আপনার চলে যাবে। এবং আমি সকলকে অনুরোধ করব দোকানদারদেরও নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে এগুলো বন্ধ করতে হবে। কোথাও সরকারকে কখনো স্ট্রিক্ট হতে হয়। A committee will probe the fire and report back to Mamata in 3 days. But this is not the first committee to be set up after a disaster. It is also unlikely to be the last. In Kolkata with Biswajit Das and Nirmal Sarkar, Monideepa Banerjee, NDTV. And so have no lessons been learned at all from previous fire tragedies? Unfortunately, Kolkata has seen more than its fair share. Monideepa Banerjee, my colleague who's been covering that story all day, is joining me now from the spot where it happened. We also have Trinamool Congress MP Vivek Gupta joining us here in Delhi, and Director Ashok Vishwanathan also joins us from Kolkata shortly. But Monideepa, let me come to you first. What more have we learnt about how all of this happened? And, you know, I heard one official say earlier that there was an emergency exit, but nobody had used it for 15 years, so it was blocked. Well, I was told that there were ultimately 3 emergency exits, but only one was really functional. And remember, it was night, everything had been locked up, the grills, the gates, everything was locked, and there was actually only one way that people could come in and go. But let me go across to Debashish Babu here. He's a lawyer and he had a chamber in this particular market. Debashish Babu, आप बताएं कि ये जो मार्केट था, इसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे थे, फायर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? सिक्योरिटी सिस्टम तो ठीक ही था, सिक्योरिटी गार्ड था, सभी था, एवं फायर सिस्टम का जो फायर का जो था क्या बोलते हैं इसको, बाल्टी में बाली सिस्टम, तब फायर ये पंपिंग सिस्टम, एक्सटिंग्विशर सभी था इसका अंदर। पर जब हुआ तब कोई यूज नहीं कर पाया ये? रात को हुआ था ना, रात सब नींद में था, रात में नींद चौक में आंख में था, वो तो थोड़ा इधर उधर लगा रहता था, वो लोग तो नहीं मालूम पाया ना कहाँ पर। एक चीज बताइए, हमारे जो फायर मिनिस्टर है जावेद खान जी, वो कह रहे हैं कि ये मार्केट ही इलीगल है, इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? এটা জাবেদদাই বলতে, জাবেদদা উনি জানেন তো, উনি বলতে পারবেন এটা। आप लोगों को जितना दूर पता है ये पूरा इलीगल मार्केट है? नहीं, टोटल लीगल मार्केट है। और ये तो बहुत पुराना मार्केट भी है। बहुत पुराना, मेरा जन्म का पहले बहुत पुराना मार्केट है, बहुत पुराना, मोर देन 60 इयर्स का पुराना मार्केट है। ये कैसे इलीगल हो सकता है? हम लोग को तो मालूम नहीं कैसे इलीगल है, हम लोग तो टेनेंट है,
हम लोग को तो मालूम नहीं ऐसे इलीगल है नहीं पर आप कह रहे थे कि फायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे पर यूज नहीं कर पाए। यूज नहीं कर पाए थे, यूज नहीं कर पाए। फायर सब लोग थे लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पाए। Amit Babu here lives in the neighborhood. He was also there right from the moment that the fire broke out. Amit Babu, आप तो यहाँ पे अंदर शॉपिंग करते थे, आप सभी को जानते थे। आप बताएं कि इसमें फायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा था? ज्यादा नहीं था लेकिन था। माने और थोड़ा बताइए। সেটা আমি বলতে চাইছি যে हिंदी में हिंदी तो थोड़ा थोड़ा जे इसमें वो जो बोला है देवाशीष बनर्जी जो एडवोकेट बोला है वो सही बात है, लेकिन वहाँ पर जो आदमी थे वो तो ये सब नहीं जानते थे कैसा उसका यूज करना है, उसको तो मालूम नहीं था। और रात को अंधकार हो गया और एकदम सुबह 3:30 बजे से हुआ है, सब नींद से थे इसलिए तो कुछ नहीं किया है। और आप जो बोलता है जो इलीगल की लीगल मार्केट तो है ही। अभी बिल्डिंग इलीगल की लीगल है तो मेरे क्या मालूम नहीं, लेकिन ये जो मार्केट है ये मार्केट पहले से ही ये मार्केट एक तो कोऑपरेटिव सिस्टम में ये मार्केट हुआ था, एक सोसाइटी एक्ट में ये मार्केट हुआ है। अभी ये है तो माने होना चाहिए ये बिल्डिंग जो बनाया है वो सही की नहीं, मैंने प्लान माफिक हुआ कि नहीं, इससे तो हम लोगों का। कितने एग्जिट्स थे यहाँ पे देवाशीष जी? अगर आप इस तरफ घूमे थोड़ा, कितने एग्जिट्स थे इस बिल्डिंग से? निकलने का रास्ता एग्जिट 5 पॉइंट्स पर 5 तो खुले नहीं था, हमने सुबह देखा एक था ना। एक दो खोल दिया, दो सिक्योरिटी गार्ड था, 2 खोल दिया। Okay, so apparently, Amit Babu put it best. There was some fire safety arrangement, but not much. And the people who were here inside the building probably didn't know how to use the extinguishers, and they had only exits. 2 of them were operating, and in the middle of the night when they were asleep, they could not make the best use of those.